Can you guys confirm again if I'm audible? Yes. Okay. Okay. Is my voice breaking? One or two people is saying that. Okay. Fine. No. ठीक है. So tell me guys, how was your yesterday's class? Yesterday was your first DOM class, if I'm not wrong. Correct? Correct. Now, you guys might be seeing that how your HTML, CSS, and JS are linking up. Correct. Till now, you guys were learning them separately, but now it will be integrated at once. All the logics and all you have learned will be applied to your VS Code directly. Correct? Yeah. Okay. So let me tell you guys what will be the flow of today's doubt session. Firstly, we will just revise your first DOM lecture. Afterwards, I will take your doubts regarding your assignments and all. Fine. Shall we start? Yeah. Sharing my screen, just confirm if it is visible. Is my Chrome visible? Okay, Chrome visible. VS Code visible? Okay. So before we proceed, just tell me in the chat how many of you were revising your HTML and CSS while you were in JS. I don't think many of you were revising that. Because JS is pretty different from what you were doing previously. Am I correct? Yeah. Okay. Okay, here is some folder. Let me create an index.html file. So what you have learned till now was HTML was done before, CSS was done before. You have learned your JS separately. Correct? Okay. So now we will just combine them all. So first of all, there is a basic template for HTML which you can use by this abbreviation. Okay. Okay. Now let's have a heading and let's open a live server. Okay. It is visible to you. Simple as that. Okay. Now, if you see the first line of your HTML document, what is this? Here something is written like doc type. Correct. What is the doc type? Doc type is HTML. And it is kind of a tree. If you know, if I will, whenever you are writing JS, use script tag. Okay. Script tag में what you will do? You can use your JS. Console.log if I console your document. Okay. It is not visible here. Where I can see that? I've consoled something. Where I can see that? Okay, some people are saying in the console, some people are saying inspect. So what do we call it in developer terms? In developer terms, we call it DevTools. Correct. Any normal people will not go anytime here. Correct. To the inspect page. So this is specially for the developers. If you go to inspect,
You will see many development regarding tools here. Inspect console, sources, network. If you were not learning this development course, will you be ever going there? Nahi na? So you will learn about all of these things going forward in the course. So if I see my console, I can see that there is something here. Correct. It is a document. What is there inside my document here? What is there inside my document? Is my voice breaking? Voice is lagging sometimes. Give me a sec. Is it still lagging? Okay, fine. Okay, take it. What is there in my document? There is some content inside it. Correct. And that content is in terms of object. If you go forward in your basically this development course, you will learn that everything inside coding is originated from an object. Okay. We will not go deep here. Once you learn the constructor and prototype inheritance and all, you will learn that everything is an object in our programming. For now, you can see that it is kind of a tree. Okay. Document object model, you can say. Okay. So in that tree, you have multiple things. You have a header, you have a head tag, you have a body tag, and afterwards head के अंदर भी आपके पास multiple चीजें. Correct. हेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? आपके मेटा का डाटा हो गया और टाइटल हो गया एंड ऑल. करेक्ट. You have learned objects, yes or no? Guys, you have learned objects, no? Yeah. So what is the syntax of just creating an object? Obj equal to curly braces. These are objects. If I have to create any key inside it, what I can do, object dot key one equal to suppose key. Okay. Now if I have to console this key one, what I have to do? I have to just do like this. Console.log obj dot key one. Yes or no? So if I see my console again, what will be there in with this console? It will be the value of this key one. Yes or no? And what is the value of this key one? Simply the key. Now similarly, if body is a part of this document, can I say that if the document is your object, this body is a key there? It is not looking like one, but can you assume that? Yes, no? So if you use here document dot body, what will be printed according to you guys? Will I be getting all other details other than body? Your head and all? You will only get body only. ऐसा ना? बॉडी के अंदर जो भी होगा वो सब चीज़ आ जाएंगे. Yes, no? All these things are of no use for you. But if you see carefully, you will have some things that you have guys have learned yesterday. Have you learned yesterday as inner HTML, inner text? So why you were able to use them? Have you defined it before using? नहीं ना?
So these all were coming from this body only. These are the keys of this body that you are able to see. अभी हमारी बॉडी के अंदर कोई टेक्स्ट है, हेडिंग वन है खाली, करेक्ट। अभी आप देखो, ये डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपने एक की बनाई हुई है इनर टेक्स्ट, करेक्ट। और इस इनर टेक्स्ट की वैल्यू वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड व्हाट यू विल सी इन द कंसोल फॉर नाउ, व्हाट यू विल सी, you will see your heading 1 only. Isn't it how the object works? Correct. Now from now on, make sure that you are seeing everything in terms of object. Okay. In objects only, you can use this dot notation. Otherwise, you cannot. If I use inner HTML, what will be there? What will be there? I will have all the HTML, all the information inside the body along with the tags we are using. Correct. Let's see. Refresh. See, heading is there. Correct. This all code was injected by live server. Don't need to see that. No issues. Okay. Can you see that H1 is here? Along with the H1, we are able to get. Okay. Now these are the basics. Let's start with some carry forward things. Okay. But directly using any consoles and all, is it enhancing any interactivity for my page? My page is still static, correct? So what is the key term that we will use to make our page non-static so that we can click on it and all? Button, not buttons. On click is a thing. But what is on click? Correct. These are events, or you can say they are event listeners. Event listeners make your page interactive. Okay. So suppose I have a button here. I can give button ID. No issues in that. Okay. Now, in order to use this button in our script tag, what we have to do, we have to catch this button. Correct. ठीक है शुभम, I'll try to use हिंदी also. गाइस, अगर हमें इस बटन को यूज करना है इनसाइड आवर स्क्रिप्ट टैग, तो हमें क्या करना होगा, इसको कैच करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर। एंड हाउ वी कैन कैच दैट, हाउ वी कैन कैच द बटन। अभी आपको ये देखना पड़ेगा बटन एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, करेक्ट। अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें आपके HTML में डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, करेक्ट। तो बटन भी उसी के अंदर कहीं पे आएगा, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द डॉक्यूमेंट डॉट, you have to get an element inside your HTML now. So to get an element, there are various ways to get it. You can get your button by its ID, you can get the button by your name only, you can get it by the query selector as well. Whichever suits you, you can use it. Here I have given the ID, so I will use document dot get element by ID, and here I'll pass the ID name. What is my ID name? Button. Correct. I've got my button. Let's store it somewhere. Let button equal to this. Okay, I have stored my button here. Now to make it interactive, what would I do? ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अभी हमें इसको इसके ऊपर एक इवेंट लिस्ट लगाना है, कोई भी इस बटन को क्लिक करे तो कोई फंक्शन रन हो, तो हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा, विच इवेंट लिस्ट, ऑन क्लिक, करेक्ट।
Now again, if you see carefully, where is this on click coming from? Was it already there inside your document? That's how you are able to use it, no? करेक्ट। अगर आप बॉडी के अंदर देखोगे तो आपको ऑन क्लिक नाम का मेथड मिलेगा। करेक्ट। इट इज नॉट लाइक कि आप डायरेक्टली कुछ भी यूज कर सकते हो। इफ आई यूज हेयर ऑन सी, विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क। व्हाई ऑन क्लिक वाज वर्किंग? क्योंकि इट इज डिफाइंड समवेयर इन द बैक एंड, दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग। करेक्ट। एंड सपोज हेयर my function is there and we are calling it. So can I use my function here only? क्या मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा? क्या लगता है? Will your HTML give you the permission to do this? नहीं, because what is HTML? What kind of language it is? Correct. It's a markup language. It doesn't hold any logic. Correct. If even if you do any mistakes in your HTML, will it give you the answers where you are wrong? It will never give you the answer where you are wrong. Only the languages which had some logic can give you the answers where you're getting wrong. So HTML was a markup language. To use the brain, we integrate script to it. Okay. So my function you are declaring here and using it basically. So we have to declare it here. Function, my function, and use this. So what I want to do is basically click me. I have used nothing here. Okay. This is the function. It is being called. Nothing will be happening. See, here is a heading one. Here is a click me. If I refresh it and click here, is anything happening? Why nothing is happening? Because we have not written any code inside my function. Correct. But what if I comment it out and now click it? What will happen? What will happen now when I click on this button? Error. What kind of error? Correct. The error would be how you are using this my function. It is not declared anywhere. So what do we call this error? It is reference error. You have to know the names of the error, guys. Okay. You know why it is. It will give you what on message, but the error name is reference error. Okay. My function is not defined. Okay. So here you got to know that there is something missing in our page or in a logic. So that's how you come here, declare a function and say I am using console dot log hello. Now if I click this, what will happen? Hello will be printed on my console. Is it there? Simple. Okay. Now what I want is when I click on this my function button, this button, click me button, I want to change this heading color to red. By default, it is white. How can I do this? Firstly, though, let's catch that. How to catch my heading? Again with the document, no? Document dot get element, or if you have not given the any ID and all, get element by tag कर सकते हो या फिर get query selector पता है आप लोगों को? What is the syntax of using query selector? Document dot query selector, and here you can use like you have catching it in your CSS. If you are catching anything with the CSS, can you catch the text directly like this? Will it work? Someone is saying no. Someone is saying yes.
Okay, let's see if we are able to catch it. Let my heading equal to this. If I do dot in a text, say put my name. If it was working, if it will be working, my heading one will not be visible there. What will be visible? Ah, correct, it is working. Okay. So let's not change it. I just want to change the color. Heading I have already got. So how to change the color? इस हेडिंग का कलर हमें चेंज करना है. हेडिंग बताओ कैसे करेंगे चेंज. हैव यू डन दैट थिंग. हेडिंग डॉट स्टाइल. श्योर. हेडिंग डॉट स्टाइल. स्टाइल के अंदर भी वी हैव एट्रीब्यूट्स डॉट कलर एंड आगे वट. You guys know everything. So this is black. If I click on it, it becomes red. Correct? Simple. You guys have learned array and all. Okay. Let's try to make it something innovative. Let's declare an array. Array equal to, say it is having colors name. Red, green, blue. I want more colors. Yellow, orange. So what I want from here is when I click on that same button, click me, it should give me different colors from it. Every time it should give me some different color. What I can do? किसी को आइडिया कोई. लूप. लूप किधर चलाएंगे हम, ये बताओ. नहीं लूप से नहीं होगा. ये क्लिक करने पे आई डोंट वांट एनी लूप टू रन. मैप से. नहीं. सुजीत गॉट सम करेक्ट आंसर. कैन वी हैव indexes? Can we use indexes directly? Our indexes starts from 0. So can we declare I as 0? Correct. So what you can do is when you click on it, you can use here array of I. It will give you a color. Correct. Yes or no? If I do I plus plus, now after giving the value, it will move forward. Yes or no? When I click it again, I will be having some different value. And these are indexes. No, we don't need loop. It is not like to iterate over the array every time you need loop and all. Let's see. It's working on it. Click. Red हुआ. Green हुआ. It's blue, yellow, orange. But if I click any more, will it be changing? क्योंकि हम last index तक पहुंच गए हैं. Will it be changing afterwards? No. You have to refresh it again. But it is a good idea to refresh on every time. So we have to do something inside my if function. So can I say that when I crosses this all the indexes, it resets to red again? करेक्ट. अगर ऑरेंज से आगे जा रहा है तो उसको हम जीरो फिर से जीरो क्लिक कर देंगे. सो व्हाट आई कैन डू इफ आई गोज ग्रेटर देन इक्वल टू. नहीं. ग्रेटर देन तो जाएगा ही नहीं ना कभी. इक्वल टू एरे डॉट लेंथ भी आएगा एक बार कभी ना कभी तो. करेक्ट.
और टू बी ए सेफ साइड हम ग्रेटर भी लगा देते हैं. Greater than equal to array dot length, what I can do is make I as 0 again. As simple as that. करेक्ट. अभी वो हेडिंग पे जाएगा तो इस बार उसको जब एलिमेंट 5 पे पहुंचेगा तो वो 0 पे हो जाएगा दोबारा. करेक्ट. सिंपल. लेट्स सी ऑरेंज के बाद चेंज होता है कि नहीं. ओके. करेक्ट. विल यू बी एबल टू डू दैट विदाउट यूजिंग जेएस. नहीं होता ना. That's why you have learned the logics JS on OJ so that you can implement these kind of things on your page. Okay. Okay. Let's see what next we can do. Alerts and all, Okay. Let's have alert also. Have a alert. Array length colors are finished. They will repeat now. Correct. We are saying to the user that all the colors are getting over now. If you click on that, click me, the colors will be restarted. Correct. Okay, let's see if it works or not. ठीक है. Orange पे we are over with the colors. If I click again, it will show you alert. Colors are finished. They will repeat now. So it will become red again. See, every time it works. Santosh, you can unmute yourself. What's your doubt? Initially, we are declaring I plus plus, right? Sorry, दोबारा बोलो. Initially, we are declaring array I plus plus, right? Heading dot style dot color. Voice is echoing here. Not able to hear properly. We are declaring the heading dot style dot color I plus plus, right? In array index. Here, here, Yeah, yeah. correct. So in the index value, is it one or zero? I plus plus. Its index value will increase. Initially, it will be 0. When you will come back here again, it will be 1. Okay. Okay. Instead of I plus plus, if we write I plus one, it will start with green. Same it will work. Instead of if you doing I plus plus there, you can do I plus equal to 1. It will be have a same effect here. Yeah. Okay. Sir. Thank you. Same as before. करेक्ट. साक्षी आप बताओ क्या राउट है आपका. ठीक है गाइस. हाँ, विदाउट फॉर लूप वो चलेगा. फॉर लूप का बेसिकली वर्क होता है क्या है. उसका वर्क होता है बस कि आपको इटरेशन देना. करेक्ट. अभी हम इटरेशन फॉर लूप में इटरेशन ऑटोमेटिक होता है. यहाँ पे हम इटरेशन कैसे कर रहे हैं. विद द क्लिक कर रहे हैं. क्लिक के साथ इटरेट हो रहा है. करेक्ट. व्हेन वी आर क्लिकिंग इट इज डूइंग आई प्लस प्लस. करेक्ट. फॉर लूप इज जस्ट अ मीडियम टू डू इट ऑटोमेटिक. ओके. ठीक है guys, can you please tell me any idea what was else covered yesterday. अच्छा, इनपुट टैग हुआ था. करेक्ट. और इनपुट टैग में ऑन चेंज हुआ था. करेक्ट. क्वेरी सेक्टर ऑल हुआ था. ओके. ओके सी, here we have used query selector and use h1, but what if there are multiple h1s and we are not giving any IDs. Heading 0. So what will happen if I click it? Which one will be changed?
Heading 0 or heading 1? Yes, only one of them will be changed, but which one? Heading 1 or heading 0? हेडिंग 0 ओनली, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर का काम क्या होता है, जो भी H1 से उसको पहला टैग मिलेगा वो उसको उठा के आपको दे देगा हेडिंग में। करेक्ट। तो हेडिंग 0 विल बी चेंज्ड। वर्क्स। ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, इंस्टेड ऑफ क्वेरी सेलेक्टर इफ आई यूज क्वेरी सेलेक्टर ऑल, which one will change now? Now this is a tricky one. बोथ होंगे कि नहीं? आर यू श्योर? लेट्स सी। नो वन इज चेंजिंग। कल आपने लेक्चर में एक चीज मिस करी है। आप जब क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करते हो तो इट विल नॉट प्रोवाइड यू एनी हेडिंग्स, इट विल प्रोवाइड यू एन एरे। करेक्ट, आई थिंक यू हैव मिस दैट थिंग। इफ आई यूज console.log heading, what it will show me? It will show me an array which is having two H1s. Correct. Now what we can do to give that click me functionality to both of these H1? No inner text. I want to change the colors for both of them, not one of them. One thing is we do it manually, but what if there are multiple? But if there are multiple, will you do one by one? See, Santosh, if you use class, again you will have an array if you catch by class. Correct? Any idea, guys, what we can do? Let me give you some hints. Where can we use our high order functions? You have learned about it in JS. HOF, where we can use it. Which one will you use? Reduce, for each, map. Are we changing anything in our headings? So we will not use map. We will not use reduce also. We will use for each. But where will we use it? Inside our function, क्योंकि everything we will be doing inside it only. Correct. So let's keep all these things here only. So instead of, we just need to give changes to here. Correct, because only this is not working, क्योंकि heading में हमारे पास एक heading नहीं है, multiple headings है. Correct. Let me change it to headings. Nothing will change क्योंकि वहाँ पे array है. array के ऊपर डायरेक्टली स्टाइल टैग नहीं लगा सकते. अगर आपको लगाना होता है हेडिंग्स ऑफ जीरो, तो वो पहला वाला चेंज हो जाता. करेक्ट. तो हमें अभी फॉर ईच का यूज करना पड़ेगा. So let's revisit your for each. How you can use for each can be used on array. Yes or no? Our headings is an array. Correct. Headings dot for each. अब ये कौन से एलिमेंट्स लेता है? सपोज इसको हम एलिमेंट नाम दे देते हैं. एलिमेंट एलिमेंट सिंपल. अब ये एलिमेंट का कलर एरे ऑफ आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. अब ये फोर ईच जब भी आप चलाओगे माई फंक्शन, ये सारी हेडिंग्स पे वर्क करेगा. करेक्ट. Yes, it takes multiple parameters, but for now we just want elements. Let's see. Will it work? Can you tell me in the chat? Will it work or not? I don't think so. Yes or no? I plus plus we are doing here. It will work or not? I have just confused you with my statement.
आई डोंट थिंक सो। आई तो है ना इधर। आई तो ग्लोबल वेरिएबल है। वी कैन यूज इट एनीवे। Nice. Right and not work. All the colors are finished. They will repeat now. Works. Let's remove our alert functionality. Works. ठीक है. Now let me give you guys another riddle. Now if I'm clicking this, I am getting all of them on same color. What if I want different colors for all headings if when I click head click me? बताओ. I want different colors for each. Let's have multiple colors. How we can give? I want to give different color to each heading, and the colors will be picking from this array only. Tell me what we can do. Any wild ideas coming on your minds? नहीं मैप नहीं करना. As simple as that यार. Instead of increasing it, increase here. ऐसा ना every element को अगला अगला इंडेक्स मिलेगा ना अभी. ऐसा ना. करेक्ट बट स्टिल देयर इज सम फ्लो. सी. मैं फर्स्ट टाइम अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो इट विल चेंज. देयर इज नो इशू इन दैट. सेकेंड टाइम करूंगा तो वो सिर्फ ऊपर वाला गया. अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ओनली फर्स्ट वाला ही चेंज हो रहा है. सी. व्हाई इज द इशू? आई एम गिविंग यू guys 2 minutes to think why that issue was there. After few clicks, when my color gets over, only first heading is getting changed. OB only with two colors. Take a moment and think. I'm just coming, guys. Yes, guys, got the answer. You guys tell me in the chat why that was happening. Okay, let me tell you guys. How many headings we are having? Six. Correct. How many colors we are having? Seven. So फर्स्ट टाइम के लिए तो वो परफेक्टली वर्क करेगा. बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना कि वो आई हमारा 6 + 6 12 हो जाएगा. करेक्ट. 12 होने के बाद
12 में इशू क्या आएगा ना कि आपके 7 6 के बाद तो कोई इंडेक्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो अनडिफाइंड आएगा, तो बाकी कलर चेंज नहीं होंगे आपके। करेक्ट। वाई दिस रेड इज चेंजिंग? बिकॉज वो फर्स्टली तो पिंक हो जाएगा, क्योंकि अगली बार भी चेक कर रहा है वो कि इंडेक्सेस है कि नहीं। करेक्ट। अगली बार चेक कर रहा है वो जब भी आप क्लिक कर रहे हो, इफ आई इज ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ विच इज, तो वो आई 0 पे सेट हो जाएगा, और अगेन वो पहला एलिमेंट आपका रेड हो जाएगा। करेक्ट, दैट्स हाउ इट वाज वर्किंग। सो व्हाट इज द क्योर फॉर दिस इज, we can use this if statement inside our this callback function. As simple as that. Will it be resolved now? If conditioning functions, there is no issues in that. Yes, guys. Will it work? Let's see. Working now? Anything else? Okay, somebody is saying, what if this should be automated? I won't have to change, click on this, click me, and this should be changing again and again by themselves. So is it possible without clicking? बिना मेहनत के फल मिलते हैं? It's possible, but if I tell you now, it won't be worth it. Okay, so let me give you some glimpse of it, if it is possible or not. As you have learned or not learned about it, so don't try also. It is of no use for you. There is something called set interval. ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मैं ये वाला उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। सिक, ये पूरा ही चाहिए अपने को। Let me set the interval for half a second. Let's see how it does. If I click on it, see, every half second they are changing. Isn't it amazing? Don't worry, you will learn this in future classes. There is no need to worry about it. Okay, someone saying make it faster. Let's make it 0.1 seconds. Click. दिवाली आ गई गाइस, दिवाली आ गई। ओके, लेट मी टेल यू अ डिफरेंट स्टोरी एज वेल। अभी आप कभी भी चेक करोगे, यस गाइस हैप्पी दिवाली। देखो, अगर मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सेकंड का बेसिकली काम क्या होता है ना, बैकग्राउंड में ये ब्राउजर के पास जाता है, और ये बोलता है ब्राउजर ब्राउजर, हर 1 सेकंड बाद क्या आप मेरा ये काम करोगे? जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो ब्राउजर को ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ब्राउजर बोलता है क्यों नहीं, बट ब्राउजर की इसमें सिरदर्दी है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार क्लिक मी कॉल किया, तो ये ब्राउजर को एक बार काम मिला कि हर 1 सेकंड बाद करना है। अगर किसी ने उस पर दोबारा क्लिक कर दिया, तो ब्राउजर के पास दो काम हो जाएंगे। एक तो वो पहला वाला ही था, और एक दूसरा काम हो रहा जाएगा दोबारा करने का। तो 2 बार करेगा, तो वो अगली बार क्या हो जाएगा उसके पास, सेम काम रिपीटेड 2 बार, वो सेकंड्स चेंज हो जाएंगे। जो काम 1 सेकंड में एक बार हो रहा था, वो 1 सेकंड में 2 बार होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, लेट मी टेल यू हाउ इट्स वर्किंग। तो इफ आई क्लिक हेयर, every 1 second they will be changing. Correct. If I click again, the interval will be faster. If I click again,
It will become more faster. If I keep clicking, it will become like hell, very fast. Correct. Background में this kind of work is going on. Okay, let's leave you guys here only. If you want to try this set interval or learn about it, you can carry on with your research and all. You will learn it in future classes if you don't want to. Let me stop recording. Okay, now if you have any doubts, you can ask. Yes, Karan. सर वो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Audible, audible. हाँ सर, वो अभी जो डॉम का वो असाइनमेंट मिला है ना, तो वो मतलब सबमिट किस पे करना है? वो रैपलिट पे करना है या फिर वीएस कोड पे जाके फिर गिट पे सबमिट करके करना है? और गिटहब के लिंक्स डालने हैं आपको अभी। नहीं, जो आई डब्ल्यू वाला मिला है मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स है प्रॉपर, जैसे पहले हम रैपलिट के लिए करते थे ना, वैसे प्रॉब्लम्स है उसके अंदर अलग अलग। तो वो एक बार रैपलिट आप के थ्रू करूँ दिखा या दो फिर मेरे को कैसे? यार, स्क्रीन शेयर करके। दिखाऊं? हाँ। मैं दिखाता हूँ, वेट। सर एक्सेस दे दीजिए। हाँ। ओके। स्क्रीन विजिबल है सर? विजिबल। हाँ सर, ये वाले जितने क्वेश्चंस हैं ये कहाँ पर क्लिक करो। करने? सबमिशन लिंक। हाँ यार, गिटहब पे ही करने हैं आपको। गिटहब पे तो सबकी अलग अलग रैपो बनाऊं कि बना करने के लिए? रेपो नहीं बनानी यार। फिर? बेसिकली आपका जो ऑफिशियल मसाई का रेपो मिला है आपको, हाँ। उसमें आप अपने मॉड्यूल वाइज फोल्डर्स बना सकते हो। तो ये सारे असाइनमेंट आप एक ही ओके फोल्डर में करके उस फोल्डर का लिंक डाल सकते हो या फिर प्रॉब्लम का लिंक। ओके ओके। और सर एक और डाउट था उससे, वो गिटहब से, कि जैसे ये रैपो हमें मिली है तो हमारा तो मॉड ये तो उसके हिसाब से मिली है जो 11 to 11 वाला बैच है उसके हिसाब से मिलेगी, उसमें यूनिट होती है, हमारे तो खाली करेक्ट। 4 मॉड्यूल है। करेक्ट, तो तो फिर बेसिकली ये किस? टेम्पलेट है, हाँ, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ये सब डिलीट कर सकता हूँ तो हाँ, यहाँ सब पर डिलीट कर अपनी दो। अपने आप फोल्डर मॉड्यूल बना? वाइज अपने फोल्डर बना सकते ओके 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 सर, गॉट इट, थैंक यू। हो। ठीक है। और किसी का इसका आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोगों ने भी असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं किया है। एक बार अटेम्प्ट कर लो, उसकी डेडलाइन अभी 7 डेज की है, उससे पहले हमारा एक और डाउट सेशन आ जाएगा। नहीं होते तो उसमें पूछ लेना आप लोग। ठीक है, और कोई डाउट्स है किसी को? बस सर। हाँ हाँ, शुभ बताओ। हाँ सर, लास्ट लेक्चर में कल हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की अमाउंट वो जीरो होता है ना, वो बढ़ाना और घटाना वो फंक्शन कैसे वर्क करता है वो सिखाया गया है ओके। सर। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा दिखाओ किधर ट्राई किया। है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। हेलो सर। हाँ, लाइव सर्वर चलाओ एक बार। ओके सर। हो रहा है बट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है सर। यार मेरे को सिर्फ वेस कोड दिख रहा है। यस को। ओके सर। फुल स्क्रीन शेयर करो। शुभम आई दिया। यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी।
VS कोड दिख रहा है खाली? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। मैं नहीं, आपको फर्स्ट सर कोड ऑप्शन। कॉपी। मैं कोड में बताता हूँ क्या इशू होगा इसमें, ठीक है? ठीक है सर। आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो एक बार। यस सर। ठीक है, तो आपने एक बटन बनाया है इंक्रीमेंट का, एक यस सर। बटन बनाया है डिक्रीमेंट का, जिसको आप कॉल नहीं हो रहा हो, आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी पहली बात। हाँ सर। और काउंटर में आईडी, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, एक अमाउंट लिया है आपने, जीरो से स्टार्ट किया है। यस एक सर। फंक्शन है इंक्रीमेंट जो ऑन क्लिक पे चल रहा है, ठीक है? उसमें आप ओके सर। एलिमेंट को ले रहे हो, अमाउंट प्लस कुछ कर रहे हो। आ, ठीक है, अभी चलना चाहिए। सर ट्राई करूँ? हाँ, ट्राई करो। नहीं सर, नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करके देखता हूँ सर। हाँ, नहीं वर्क कर रहा है सर। सेव नहीं किया वो, रुको। अभी ट्राई करो रिफ्रेश करके, सेव कर लो एक बार। ठीक है सर। हम्म। हाँ सर हो रहा है सर। ठीक है, वो बेसिकली वही ठीक था, है सर। कॉल ही नहीं की थी आपने बस। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, समवन वाज सेइंग समथिंग। शंका। यस सर, मैं बोल रहा हाँ था शुभम। सर, एक्चुअली मुझे ना सीपी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ओके। उसमें कोडिंग मतलब कैसे करेंगे वो सीपी प्लेटफॉर्म में, और उसके लिंक कैसे सबमिट करेंगे। अगर आप मुझे एक सम अगर बना के, अगर मतलब मुझे ठीक। पूरे डिटेल्स में समझा दोगे एक बार फिर से तो अच्छा रहेगा। मीन्स डिटेल इन द सेंस सीपी मैंने सब कुछ खोल लिया है, बस उसको वो ठीक कैसे है। ओपन करना है और उसको ठीक है, कैसे मैं सबमिट करना मैं एक बात बताता हूँ आपको। हमने लास्ट टू लास्ट आउट सेशन था, उसमें है। यस पूरा 40 to 45 मिनट्स मैंने उसके ऊपर ही बताया है। वो आपको आइए राहुल चैनल पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? उसमें मैंने असाइनमेंट को मैंने। सॉल्व करके कैसे सबमिट करना है वो भी बताया हुआ उसमें। ओके ओके, ठीक है सर। एक बार उसको रिविजिट कर लो, है ना? शायद आप उस दिन डाउट सेशन में नहीं थे। नहीं नहीं था सर, बट मैंने वीडियो, बीच में मेरा नेटवर्क इश्यूज था तो वो बीच में ब्लर हो रहा था बार बार, इसके लिए शायद में ठीक है, भी। एक बार ठीक रिपीट कर। ठीक। ठीक है, और किसी का डाउट्स कोई? हाँ सर। हेलो। यस करण। सर वो फोल्डर्स डिलीट कैसे होंगे, मतलब उस वाली रैपो से? रैपो से डिलीट मत करो, उसको जब क्लोन कर लिया ना पहले, तो अपने लोकल हाँ से डिलीट कर दो, फिर आप अगली बार जब ऐड कमिट पुश करोगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सही का रैपो कैसे यूज़ करना है वो बताऊं? सुजीत, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सुजीत आ रही है? यस सर। हाँ। तो क्या इशू आ रहा है आपको? मसाई से रैपो मिली है आपको? हाँ सर, मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या करना है ना आपने, कैन यू गिव मी द परमिशन? ओके, गिटहब इज हेयर आपका। ओके, दिस इज योर रैपो, करेक्ट? यस ठीक है, तो इस रैपो को लो, कॉपी, और अभी क्या करो, इसको कहीं भी आपको जहाँ मन है वहाँ पे इसको क्लोन कर लो। क्लोन किया है आपने? नहीं सर, एक न्यू ठीक है। फोल्डर में क्लोन कर दिया। ठीक है, तो गिट इंस्टॉल कर लिया आपने? हाँ सर, कर लिया। तो ये बेसिकली, मैं आपका डेस्कटॉप खोल लेता हूँ।
तो जहाँ पे क्लोन करना है बेसिकली आपका टर्मिनल में वही एड्रेस खुला होना चाहिए। git bash खोला। command for cloning is git clone. It's not getting inserted. Wait here. This is the cloning command। ठीक है, क्लोन हो गया है आपका। अभी आप इसको अपने VS कोड में खोल लो। Where it is? This one is it, I guess। ठीक है, ये क्लोन होके आ गया आपका। यहाँ पे आप अपना कोड डालो और फिर अपने टर्मिनल से ऐड कमिट और पुश कर दो। ठीक है, ठीक है सर। बाकी सेटअप हुआ हुआ है आपका। थैंक यू सर। Any person having any doubt? If you're not having any doubts, guys, you can drop off. Thank you so much for joining. Have a good night. Shubham, have you integrated? Shubham, are you there? यस सर। Have you integrated that from your profile? GitHub? व्हाट सर? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। I'm asking, have you integrated your GitHub account on your LMS? सर मुझे समझ में नहीं आया। हमने लास्ट टू लास्ट डाउट सेशन में देखा था ना कि आपको अपना GitHub अकाउंट LMS पे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है सर? मुझे समझ नहीं आया। इंटीग्रेट मैंने वहाँ पे एक सेक्शन है। आप एक काम करो, लास्ट टू लास्ट की आइए राहुल पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डाउट सेशन की, वो एक बार रिविजिट कर यस लो, सर। है ना। ओके सर। ठीक है, ठीक है। बाय गाइस। The recording for this doubt session will be there on your LMS only. Okay.